kernel values over there in each type of filter. Like if you are using high pass filter, then what should be, or if you are using edge detection, right edge, right diagonal, left diagonal, vertical, horizontal, whatever type of edge detection you want to carry out. The main thing is that you should remember the kernel values. Okay. In today's turn, we are going to take two new topic of edge enhancement, which are first is Fourier transformation and second one is multi-image manipulation. Okay, so we are going to start with that one. So, so as you can see now on the screen, that what we have done, we have learned the contrast enhancement, we have learned thresholding, binary thresholding, gray level thresholding, level slicing, contrast enhancement. In contrast enhancement, we have learned about the linear stretching, in which there is min-max stretch, saturation linear contrast stretch in contrast enhancement, and piecewise linear stretch. And the last one was histogram equalization. So these all are topics have been covered under the contrast manipulation heading. Thereafter, we have started the spatial feature manipulation, and in the spatial feature manipulation, we have learned about spatial filtering, we have learned about the edge enhancement. Okay, so in today's turn, we are going to the last one, which is Fourier analysis along with the multi-image manipulation. So all of you, first of all, note down this detail. In some of the classes, we have partially written it down, isn't it? You have partially written it down, or you may have created that diagram also. So just go there and write down the complete list of image enhancement techniques, because we have already done up to this point. Okay, so what is left? Fourier analysis along with multi-band ratioing, or you can say multi-image manipulation over here. So I'm going to start with Fourier analysis. All must have written it down. Ma'am, just 30 seconds, ma'am. Done, ma'am. Okay.
So we are going to start the Fourier analysis. So you must have learnt about the Fourier analysis in your first year mathematics. BTech first year mathematics, we learn Fourier transformation over there. So we are not going into the mathematical detail of this one, but in this analysis, what is going to happen, that till now, whatever we have done everything in the spatial domain. Okay, in the XY discrete spatial domain, this is how we are doing the image processing till now. But there is one more domain which is called the frequency domain. Okay, there is a frequency domain also in which the image processing carries out. So we are going to learn in the Fourier analysis, we are going to consider the frequency domain over here. Okay. So when we say for frequency domain, it means that instead of considering the discrete dn values along the each pixel, in this one there will be frequencies that will be considered. Okay, like it is given over here. This one means conceptually this operation amounts to fitting a continuous function through discrete dn values if they were plotted along each row and column in an image. So this is what the Fourier transformation is going to be used. In this one, we are going to work in the frequency domain, and when we work in a frequency domain, we do not consider the discrete dn values. Till now, what you are learning, that there will be a pixel, there will be a dn value, and whatever operation you are performing, whatever filtering you are doing or stretching you are doing, everything is done on a pixel wise, on a dn values. But now that domain was spatial domain, but now which domain we are going to consider? It is frequency domain, means we are going to convert our image from spatial domain into which? Into the frequency domain. Okay. Have you ever learned anything about the frequency domain? Have you ever worked on this frequency domain earlier? In image processing, when you are working on the image earlier or in any other subject, have you worked on the frequency domain of the images? Ma'am, frequency of values we have worked in that GDP, geospatial data processing, but not image, ma'am. No, it is something else. So, okay, so I am assuming that nobody has worked on the frequency domain of the image. It's okay. So when we need to convert in spatial domain, what we have? We have discrete dn values. Okay, this is what we have in the spatial domain. And when we are converting it into the frequency domain, we need to convert these discrete dn values into what? Into continuous functions. Okay. So this is what we are going to do. We are going to convert spatial to frequency domain. We are converting from discrete dn values into a continuous function. So this is what they are saying, that this operation amounts to fitting a continuous function through the discrete values if they were plotted along each row and column in an image. Okay. So for it can be done either along the column or along the row. So for all the dn values that are in a row, there will be some function. Okay, there will be some mathematical function through which we are going to represent each of those rows. Okay, so the peaks and values along any given row or column can be described mathematically by a combination of sine and cosine waves with various amplitude, frequency and phases. For this purpose, that is, in order to convert the discrete image or the spatial frequency domain into the spatial domain to frequency domain, what we are going to use over here, we are going to use this one, this equation. This is what? This is Fourier transformation.
Okay, this is a standard formula of Fourier transformation. You may remember it because this is what we have learned in the BTech first year. So this is the simple mathematical formula of Fourier transformation. So by using this one, by using such type of formula in which fu is the frequency domain and this fx, small fx is the spatial domain. So by using this one, by using this formula, we are going to convert this frequency domain into the this spatial domain into the frequency domain. And as you all know that there is a, when we are performing a Fourier transformation, by using the inverse Fourier transformation, we can get the original value. It means by using the inverse Fourier transformation, which is given in the second equation, the frequency domain will come back into the spatial domain. Okay, so this is done by using Fourier transform. Okay, and the reverse of this one means when we convert, we can convert frequency domain back into the spatial domain by how? By using inverse Fourier transformation. Okay, by using inverse Fourier transformation, we can again convert the frequency domain back into the spatial domain because all the time we work in the spatial domain. So that is why the Fourier transformation is preferred, because it can easily get inversed. We can reverse the procedure and we can get back the spatial domain data by using the inverse Fourier transformation. So since we have a two-dimensional data, the image is a 2D data, we have rows, we have columns. So instead of using this one-dimensional, the next formula is showing the two-dimensional data. Okay, so this one is just the extension of the equation one. In this one, only one u is considered, and in this one, uv means row column both are taken. Two-dimensional Fourier transformation is given in equation 3, and this is how, okay, this is how, this one is for the continuous function, this one is the discrete function. As you can see, the integration is get converted into the summation over here. So basically what we are doing, we are converting the image by using this formula into the frequency domain, and by using the question number 5 we can get back our spatial domain or spatial domain data from the frequency domain data. So when you carry out the Fourier transformation, see how the image will appear. Okay, this one is the original image, and when the transformation is done, okay, the Fourier transformation will appear like this. So this is what it is given over here. After an image is separated into spatial domain, it is possible to display these values in a two-dimensional scatter plot known as the Fourier spectrum. So this one is illustrating the Fourier spectrum. I will first show you how the things appear. Like suppose I am opening one of the image. Um, just wait. Like suppose I will take this one is the image, okay, single band image, and this one is the spatial domain image. Now by using the Fourier transform, okay, okay. So this one is again I am taking in the input file, I am using this image, and
Okay, so Fourier transformation is going on. Okay. So I am opening band 4 Fourier transform. See. So this is how the things will appear. This one is the original image. The left hand side is the Fourier image. The right hand side is the equivalent image. But this one is given in after the Fourier transformation. Okay. So this is how the image will get converted into the Fourier transform, and okay. And if we see the spectrum of this one, okay, as you can see in this example, when we carry out the spatial transformation, Fourier transformation, and if we check the Fourier spectrum, if it is appearing like this, then all the values that are falling at the center, okay, the low frequency values will fall towards the center, and the higher frequency, okay, higher frequency will gradually, progressively go out in the outward direction. So this is how the Fourier spectrum appears. The high frequency will be at the outer area and the low frequency will be at the central position. Now, how this thing is useful, how we can use this thing. You have learned about the high pass and low pass filter earlier. So here also we can apply the filter, and if we can remove the central value, then what will be the output image? It will be the image that is obtained after performing the high pass filtering, because the central value, the values which are located at this position where I am placing my cursor, they are low frequency values. So in case of high pass filter, the central values are clipped out. Similarly, for the low pass filter, these outer portion is clipped out. Okay, so this is how the filtering is performed over here. So this is what it is written. After an image is separated into its component spatial frequencies, it is possible to display these values in a two-dimensional scatter plot shown as Fourier spectrum. Figure illustrates a digital image and its Fourier spectrum. The lower frequencies in the scene are plotted at the center of the spectrum. You need to remember this thing. Okay. And progressively higher frequencies are plotted outward. Features trending horizontally in the original image result in vertical component in the Fourier spectrum, and features aligned in the vertically in the original image result in the horizontal component in the Fourier spectrum. So suppose if you have line stripping error. Okay, suppose if you have a line stripping error, how the Fourier spectrum will look like as per this line. According to this line, I have one question. If you have band stripping error in the image, how its Fourier spectrum will look like? Ma'am, in Fourier spectrum, vertical component will not be there.
Okay. Vertical component will not be there. Why? Ma'am, because band stripping means is that particular horizontal one strips are not there. Then when strips are not, then how that will be result in vertical component in the Fourier spectrum. What is band stripping error? Ma'am means strips uh, that white strips available in the horizontal form in the image. I think so. You are getting confused with the line dropout error. Yeah, ma'am, maybe. Sorry, ma'am. What you are saying is line dropout error. In case of line stripping error, after a certain, like suppose if we have Landsat ETM plus data, so every 16th line will appear brighter because there will be some detector whose which will get miscalibrated, and that's why it will start giving higher or lower value, something like that. Okay. So suppose if I am assuming that it starts giving somewhat higher values, so how the output Fourier spectrum will look like? Yes, anyone? Yes, Alok? मैम नहीं पता। क्यों नहीं पता कर रहे हैं? इसमें यहाँ देखे ना, पीडीएफ में क्लियरली लिखा है, या तो समझ नहीं आ रहा है, फिर अगर नहीं पता है तो इसको देखो, पढ़ो उस लाइन को जिसको हाईलाइट किया है। फीचर्स ट्रेंडिंग हॉरिजॉन्टली इन द ओरिजिनल इमेज, मतलब ऐसे फीचर्स जो कि इमेज में हॉरिजॉन्टली आते हैं। क्या लिखा है? रिजल्ट इन वर्टिकल कंपोनेंट इन द फोरियर स्पेक्ट्रम। फोरियर स्पेक्ट्रम में वो वर्टिकली अपीयर करेंगे। फीचर्स अलाइन वर्टिकली इन द ओरिजिनल इमेज, जो फीचर्स किसी इमेज में वर्टिकली आ रहे हैं, रिजल्ट इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द फोरियर स्पेक्ट्रम, वो फोरियर स्पेक्ट्रम में हॉरिजॉन्टली आएंगे। अब बताइए, अगर लाइन स्ट्रिपिंग एरर है तो कैसे आती है लाइन स्ट्रिपिंग? मैम हॉरिजेंटली आती है। हाँ, सही बता रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम में कैसा आएगा वो? मैम तो वर्टिकल कंपोनेंट लॉन्गर होगा इसका स्पेक्ट्रम। yes, वो वर्टिकली आएंगी लाइन्स, इसमें एग्जांपल में दिया नहीं है। अगर चेक करने मुझे इस एग्जांपल को देखिए, देख रहे हैं ये फिगर ए जो है, फिगर ए सब लोग देखिए, फिगर ए कौन सी एरर दिख रही है? मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसमें लाइन ड्रॉप आउट, लाइन स्ट्रिपिंग एरर हो, बट मेन थिंग जो है कि इसमें कुछ नॉइस आ रही है। ये एक एरियल इमेज इन्होंने बताई, एक एरियल इमेज है जिसमें नॉइस आ रही है, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है ना। और जो अभी हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा, दैट दी हॉरिजॉन्टल फीचर इन द इमेज विल रिजल्ट इन द वर्टिकल कंपोनेंट इन द फोरियर ट्रांसफॉर्म। यही पढ़ा है कि जो हमें इमेज में हॉरिजॉन्टल फीचर्स दिखते हैं वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद में कैसे दिखेंगे, या फोरियर स्पेक्ट्रम में वो हमें कैसे दिखेंगे, वो हमें वर्टिकली दिखाई देंगे। ये थियोरेटिकली हमने पढ़ा, और ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दोनों को, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ का हॉरिजॉन्टल किस तरीके से वर्टिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से इसमें अगर कोई वर्टिकल कंपोनेंट होता, यहाँ हॉरिजॉन्टल है इस इमेज में, अगर सपोज कुछ वर्टिकल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, उसका इक्विवेलेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैसा दिखता? हॉरिजॉन्टल दिखता है। यहाँ पर अगर जो काम आपने लाइन स्ट्रिपिंग एरर में, डी स्ट्रिपिंग करने में हम लोग ने इतना कुछ पढ़ा है, अगर वही काम हम लोग यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म में करेंगे, याद है किस तरीके से, कौन कौन से मेथड्स हम लोग ने पढ़े थे? बताइए कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे? यस अरुण? मैम डी स्ट्रिपिंग, लीनियर मैचिंग
Okay. Yes, ma'am. Linear matching and histogram, ma'am. हिस्टोग्राम आगे बस ma'am, अभी 2 ही याद आ रहा है मैम। अरे हिस्टोग्राम कौन सा मेथड होगा? हिस्टोग्राम तो हिस्टोग्राम होता है ना। तो यस, लीनियर मैचिंग ये सही आंसर है। हम लोगों ने लीनियर मैचिंग का पूरा, अगर आप लोग को ध्यान होगा कि एक बहुत लंबा न्यूमेरिकल किया था उसके ऊपर, जिसमें कि आपने हर एक बैंड के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकाला था, देयर आफ्टर ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन, ओवरऑल मीन, फिर गेन निकाला था, बायस निकाला था, और फिर जाकर के हर एक पिक्सल की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। ये पूरा प्रोसीजर हम लोग ने लीनियर मैचिंग करते टाइम पे किया था। वही काम अगर आप इस पे देखें तो क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक क्लिपिंग ऑपरेशन करने की जरूरत है, और क्लिप करके इन वर्टिकल लाइंस को यहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, क्या करना है। सो अगर आप इमेज प्रोसेसिंग में डील करेंगे तो स्पेशल डोमेन इज कंपैरेटिवली इजियर देन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑल्दो टफ होता है, लेकिन उसमें जो वर्क हम लोग कैरी आउट करते हैं वो काफी सिंपल होता है। जैसे अभी आपको लीनियर मैचिंग का बताया कि हम लोग ने स्पेशल डोमेन में सीखा था कि किस तरीके से लीनियर मैचिंग के थ्रू बैंड स्ट्रिपिंग एरर अगर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करेंगे। उसी का इक्विवेलेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म करके इस स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन जो कि इस एरर को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर इस वर्टिकल लाइन को क्लिप करा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करके ओरिजिनल इमेज लेकर के आएंगे तो वहां पर इसको, इस एरर को रिमूव हो जाएगा ये। ठीक, ये केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, अगर इमेज में कहीं हमारे नॉइस प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इमेज में जैसे रैंडम नॉइज आप लोग ने देखा है, ठीक है, इमेज में अगर कहीं भी रैंडम नॉइज प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कराने के लिए भी इसी तरीके से हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम लोग फिल्टरिंग के उसमें पढ़ रहे हैं, इमेज इन्हांसमेंट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको इसको देखना पड़ेगा किस तरीके से ये लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है और किस तरीके से हाई पास फिल्टर की तरह। सो आप लोग एक क्विकली 2 डायग्राम बनाइए। इमेज का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद में फोरियर स्पेक्ट्रम ऐसा आ रहा है। अगर आप इस पर हाई पास फिल्टर लगा देंगे तो आउटपुट, यानी कि आउटपुट फोरियर स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा, और अगर लो पास फिल्टर लगा देंगे, ठीक है, हाई पास फिल्टर एक बार लगाएंगे और एक बार लो पास फिल्टर लगाएंगे, दोनों के ही आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, दोनों के लिए फिगर अलग अलग बनाइए। आपको पहले ही पता है लो स्पेशल फ्रीक्वेंसीज टुवर्ड्स सेंटर रहती है और हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है। जैसे इस फिगर में जहां पर अभी हमने कर्सर रखा है सेंटर पे, यहाँ पर लो स्पेशल फ्रीक्वेंसीज लाया करेंगे, बट हम लोग जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे वहां पर हायर स्पेशल फ्रीक्वेंसी रहेंगी। सो अगर हाई पास फिल्टर लगा रहे हैं एंड लो पास फिल्टर लगा रहे हैं तो आउटपुट फोरियर स्पेक्ट्रम दोनों का इंडिविजुअली कैसा कैसा दिखेगा, उसको ड्रॉ करिए अपने कॉपी पे। Answer is this.
this is how the Fourier spectrum of low pass filtered image will appear, and this is how high pass filtered image Fourier spectrum will appear. Okay, so in high pass filter, in the outward direction the high spatial frequency resides, and at the central position, at this position, there are low spatial frequency. So therefore this portion is getting clipped out. Okay, why it is getting clipped out? Because lower spatial frequency have been removed in the high pass filter. This right hand side images is showing the equivalent output. Okay, so this one is the low pass filter, this one is the high pass image. Okay, low frequency image and high frequency image. So if you have a low frequency image, the Fourier spectrum of the low frequency image, as you can see, the outer components have been removed, have been clipped away. Okay. But when we have high frequency image, you can see the lower frequency values are removed from the spectrum. Okay, and the higher frequency portions are retained. So this is how the actual Fourier spectrum will look after performing the high pass filtering and low pass filtering. So this one is the original Fourier spectrum. This one is the original image. Okay, figure A is the original image, figure B is the Fourier spectrum. And now you can see this one is the figure B is the low pass filter image, low frequency image. Figure D is the high frequency image. And you need to observe the change in the Fourier spectrum, how the Fourier spectrum is getting changed over here. Okay. So once this action is done, once this, suppose if you have this spectrum, once the clipping operation is done according to the requirement, by performing the inverse Fourier transformation, we can obtain the image again in the spatial domain. Okay. Like as you can see it over here, I have the Fourier, I have the images after carrying out the Fourier transformation. So this one is the frequency domain image, and if I will perform if I perform inverse Fourier transform, see, I have taken the inverse Fourier transform in the input. I am giving the band 4 Fourier. Okay. So let's see what we are getting in the output. See, we are getting back our original image after carrying out this inverse Fourier transformation. Okay. Now we are coming to the next topic. This next topic is about the multi-image manipulation. Okay. What is multi-image manipulation? In this one, we will consider more than one band whenever we are carrying out the manipulation. In case of multi-image manipulation, we are basically considering multiple bands over here. The very first task that we perform in multi-image manipulation is the spectral ratioing. This spectral ratioing is very useful, and here we are going to build different indices that are later on will be very useful to you. So before going through this spectral ratioing, first see the problem over here. Okay. See, suppose this is one hilly terrain. Okay, this one is the hilly terrain. There are two types of trees that are present in this forested area. There are some deciduous trees. Okay, this umbrella shaped trees are called this curved shape trees are called
deciduous trees, and these trees which have a pointed peak over here, these are known as the coniferous, in the shape of a cone. They are coniferous trees. Okay, there are deciduous trees and there are the coniferous trees. Okay. Now, if I take the very basic example, I think so all of you have gone through this example of the Lillescent kefir in the previous subjects. Just wait. Just wait for a minute. Yes, this example. So whenever we learn about the different bands in remote sensing, this example is always given to us. Like in this example, as you can see on the screen, the figure A. Okay, so figure A is some forested area. So when you see the figure A, okay, what is this? Low altitude oblique aerial photograph illustrating deciduous versus coniferous trees. Figure A is the panchromatic photograph recording reflected sunlight over the wavelength of 0.4 up to 0.7. Okay. Now in this one, can you make a difference between the coniferous and the deciduous trees? In this figure A, can we make this difference? What they are saying that the first one is taken from 0.4 up to 0.7. This one is the wavelength range from 0.4 up to 0.7, isn't it? Yeah, 0.4 up to 0.7 micrometer. This one is the wavelength range of the first one. So answer is no, we cannot make the differentiation between the deciduous and the coniferous trees over here. But when the same image is recorded from 0.7 up to 0.9 micrometer, see the difference. See the difference. Okay. See the first image, see the second image. Compare both the images. Okay, like this region. Okay. Compare both the regions. So when you compare both the regions, in figure A, you cannot make a differentiation between the trees. I have drawn the circle over here. You cannot make a distinction between the trees. But when you consider the figure B, there is a clear-cut difference among the trees. As you can see, some appear more brighter than the other one. These trees are appearing comparatively darker. Why this thing is taking place? If this question comes in the examination, that there is a forested area, there are the deciduous trees and coniferous trees, it is a mixed kind of forest. By using remote sensing or by using image processing, how could you differentiate between both type of trees? What will be your answer? Yes, Bhagat? Yes, ma'am. Yes. What will be your answer? Bhagat?
Yes, ma'am. Uh, uh, yeah. So if there is a difference in grayscale, it may be due to different spectral signature of different trees, how light is reflected from different surfaces. No, your answer is okay, but after learning the spectral reflectance curve, this maybe is not good. This probably, maybe these terms are not good. Okay, you can mute yourself. Please mute yourself. Yeah, all of you. This question is for everyone because all of you must have know the spectral reflectance curve of the deciduous trees and the coniferous trees. So this is how we give the explanation over here, like this. Those students who do not remember this thing, draw this spectral reflectance curve. This is very important and very basic question. Because every time, whenever we learn the image processing, every time there will be a forest and this type of discussion is going on. So this basic question need to be answered by everyone. हर किसी को ये पता होना चाहिए. So सबसे पहले इस स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व को जल्दी से ड्रॉ करिए. Spectral reflectance curve 0.4 to 0.5 blue band, 0.5 to 0.6 green, 0.6 to 0.7 red, 0.7, 0.8 up to 0.9 there is near infrared. On the x-axis, on the x-axis we have wavelength, on the y-axis there will be reflectance. Okay, and then there are two curves, one for the deciduous trees, another for the coniferous trees. For the deciduous they are taking maple tree, for the coniferous they are taking pine tree. Draw this curve. There is no need to make a 3D, even if you make a simple curve, linear curve over here like this way. Okay, Megabat. Yes, ma'am. Yeah, now on the basis of this uh, spectral reflectance curve, Yes, ma'am. how will you answer the difference in the images? Okay, in the previous images that I have shown of the forested area, how will you define that difference that is coming over there? If the percentage of reflectance is between the 20 to 30 in the wavelength of 0.7 to 0.9, it becomes a coniferous trees, ma'am. And if the reflectance is more than 30, up to 45, in the wavelength range is 0.7 to 0.9, ma'am. Say. But Okay. wavelength range is same, but reflectance should be in coniferous reflectance should be less than 30% of reflectance. So in this one, figure B, okay? Yes, ma'am. In figure B, which one are the coniferous trees and which one are the deciduous tree? Brighter Ma'am, or darker? brighter one is a coniferous trees, ma'am, and dark
darker one is a which one? Deciduous trees, ma'am. Are you sure for your answer? Ma'am, which this is which second B option? Rounded one is a coniferous trees, ma'am. No, I'm not a. Answer is general. Question is general. Brighter trees and the darker trees. Both trees are coming on in the figure B. So which Yes, ma'am. one is the deciduous? Which one is the coniferous, and why? Ma'am, deciduous is a brighter one, ma'am. Darker one is a coniferous, ma'am. Why? Why? Because it seems to be like cone shape and it reflects sunlight over 0.7 to 0.9 micrometer wavelength, ma'am. No. Your answer is not at all satisfactory. Okay, next, Parul. Yes, ma'am. So, ma'am, the circle portion is a deciduous tree. The deciduous tree in the second image is a darker one because deciduous in NIR band it has very high reflectance. This means that in image it reflect darker, indicate the healthy vegetation, and the lighter one is the coniferous tree. Because in NIR band, compared to deciduous, it have low reflectance. I'm not getting why you people are answering like this way. Think again. Think again. May I? Yes, Parul, again. Then image B, the darker portion indicate the deciduous trees. See this reflectance curve. So deciduous trees have a high reflectance in NIR band compared to coniferous trees. So, Okay, next, Praveen. Yes, ma'am. Yes. मैम deciduous ट्री होता है मैम जो मतलब it grows outside of trees और then more area of basically क्या नाम deciduous जो ट्री होती है वो बाहर के साइड में ग्रो करती है और मतलब मैम इसका क्या है कि मैक्सिमम इसका एरिया ज्यादा तो क्या नाम रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होता है तो मतलब सेकंड वन इज deciduous tree and coniferous trees मैम प्रवीण, First क्वेश्चन one. बड़ा सिंपल है. फिगर इसका बी reflectance में कम जो होगा. ब्राइट कलर से आ रहा है, आपको दो तरीके के पेड़ दिख रहे हैं. कुछ डार्क कलर से आ रहे हैं, कुछ ब्राइट कलर से आ रहे हैं, है ना? कुछ ब्राइट है, कुछ डार्क Yes, है, ma'am. दिख रहा है ना? अब क्वेश्चन सिंपल सा इतना Yes, है ma'am. कि इसमें से कौन से डेसिडुअस होंगे और कौन से कोनिफेरस होंगे और क्यों होंगे? मैम जो मतलब डार्कर साइड है वो मैम डिसिडुअस होगा क्योंकि मैम डिसिडुअस ट्री मतलब इसका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होता है कंपेयर कॉनिफरस ट्री के. तो वो डार्कर होगा. ओके, चलिए अगला बताइए शिवम. मैम जो कोनिकल मैम ये कोनिफेरस ट्रीज होंगे मैम वो डार्कर होंगे मैम एज कंपेयर टू डेसिडियस ट्रीज. अब आप डार्कर कह रहे हैं, क्यों? आपका कुछ आंसर क्यों बदल गया? बाकी सब लोग तो कह रहे हैं कि कोनिफेरस ब्राइट होगा और डेसिडुअस डार्क होगा.
आप कह रहे हैं क्योंकि मैम डेसिडुअस ब्राइट होगा और कोनिफेरस डार्क होगा, तो इस चेंज का कारण किस बेसिस पर आप ये चीज बोल रहे हैं? मैम NIR रेशियो मैम हेल्दी केस पे मैम लो स्ट्रेस वेजिटेशन होगा ना। क्या चीज? रिपीट करिए आंसर, थोड़ा तेज बोलिए। मैम जो हेल्दी वेजिटेशन होगा उसमें मैम चलिए नेक्स्ट शुभम। मैम मैं आंसर करूं? नहीं, शुभम Yes, ma'am. बताइए। Ma'am, coniferous trees will be more brighter because their reflectance is 30 to 40%. They will generate higher DN values, and deciduous trees will be darker, 20 to 30% reflectance. They will generate lower DN values. चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जो भी है कौन है नेक्स्ट? सुमित। Ma'am, deciduous will be the brighter one and coniferous will be the darker one because coniferous has least reflectance as compared to deciduous one. चलिए, और कोई भी एक बीच में आंसर करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आंसर कर लीजिए। Ma'am, in NIR band, the reflectance of deciduous tree is more than coniferous tree. So, ma'am, in image B, darker one are coniferous tree and a brighter one are deciduous tree. बाकी लोग जो इसका अपोजिट आंसर कर रहे थे, वो हमको ये बताइए कि आप लोग को स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व को रीड करना नहीं आता है? इतना मूर्खतापूर्ण आंसर कर रहे हो आप लोग कि डेसिडुअस ट्री का रिफ्लेक्टेंस वैल्यू ज्यादा है तो वो डार्क कलर का आने लगेगा, और कोनिफेरस का रिफ्लेक्टेंस कम है तो वो ब्राइट कलर का आने लगेगा। ये पढ़ाया गया है आप लोग को? रिफ्लेक्टेंस कर्व भी आप लोग को रीड करना नहीं आता है? रिफ्लेक्टेंस कर्व में जिसका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्राइट होगा, यही तो पढ़ाते हैं, यही तो पढ़ते हैं सब लोग। आप लोग ने पूरा का पूरा चैप्टर 1 चैप्टर 2 पॉल मैदर का क्या पढ़ा है, क्या रिवाइज किया है उसको? इतना पढ़ने के बाद भी रिफ्लेक्टेंस कर्व रीड करना नहीं आ रहा है आप लोग को? रिफ्लेक्टेंस कर्व देखिए आंख खोल करके, इसको बार बार दिखा रहे हैं फिगर 1.7, उसको कॉपी पे भी ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी नहीं आंसर कर रहे हैं। ब्लू बैंड देखिए, ग्रीन बैंड देखिए, रेड बैंड देखिए, देन एनआईआर बैंड चेक करिए। वेजिटेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेजिटेशन में यही हम लोग पढ़ते हैं कि एनआईआर बैंड में जाते जाते रिफ्लेक्टेंस बढ़ जाता है, रेड में बहुत कम होता है, ग्रीन में कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, इसीलिए हमको वेजिटेशन ग्रीन कलर की दिखती है। उसके बाद में इसमें देखिए वेजिटेशन में भी दो कैटेगरी का ड्रॉ किया गया है, वन इज डेसिडुअस, सेकेंड वन इज कोनिफेरस। दोनों के बीच में गैप दिख रहा है। डेसिडुअस का रिफ्लेक्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू कोनिफेरस ट्रीज। दिख रहा है ग्राफ में सबको? देखिए कोनिफेरस का खुद से रीड कर रहे हैं तब भी गलत आंसर कर रहे हैं। 30 to 20% का रेंज दे रहा है कोनिफेरस का, डेसिडुअस में 35 to 45 की रेंज आ रही है। तो रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा तो वो ब्राइट दिखेगा इमेज में कि डल दिखेगा इमेज में? रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होने पर ब्राइट दिखता है इमेज में। वो जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा वो ब्राइटर आएगा एज कंपेयर टू दोज ऑब्जेक्ट्स whose reflectance value is lower। तो रिफ्लेक्टेंस कर्व में अभी आपने क्लियर कट देखा कि डेसिडुअस का रिफ्लेक्टेंस ज्यादा है, कोनिफेरस का रिफ्लेक्टेंस कम है। बैंड बी जिसको क्लियर कट लिखा है, इसके कैप्शन में लिखा है कि 0.7 अप टू 0.9 माइक्रोमीटर पर फिगर इमेज बी को लिया गया है। इमेज ए किसमें है? 0.4 to 0.7 मींस पूरा जो विजिबल रेंज है करीब करीब पूरा का पूरा वहां तक आएगा। 0.4 to 0.7 मींस ब्लू ग्रीन रेड। ऊपर वाले में फिगर ए को देखेंगे तो उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बाकी जहां तक शेप की बात रही तो शेप तो दिख ही नहीं रहा है उसमें। फिगर ए में, फिगर बी में जो हम लोग कोनिफेरस एंड डेसिडुअस का पढ़ते हैं कि कोनिफेरस कंपैरेटिवली
उसका जो पीक होता है कोन के शेप में होता है, तो वो तो आप विजुअली आप देख ही नहीं पा रहे हैं, इसमें तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये कोनिकल, ये कोनिफेरस है कि डेसिडुअस है। बाकी रिफ्लेक्टेंस कर्व दिखाने के बाद भी आप लोग का ना बताना पाना, ये क्या बोला जाए, चिंताजनक है। इसको थोड़ा सा पढ़िए और अच्छे से। और यहाँ पर वही चीज आपको आउटपुट में दिख रही है कि जो डेसिडुअस ट्रीज हैं, सिंस उसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग के एंड से, as per the reflectance curve, it is clear that the deciduous trees have more reflectance as compared to the coniferous trees in the near infrared band. Therefore, when we see the image given in figure B, where the image is captured in the NIR range, that is from 0.7 micrometer up to 0.9 micrometer, the brighter trees are the deciduous trees, while the dull color trees or darker trees are the coniferous trees because of the gap in the reflectance. Deciduous has more reflectance as compared to coniferous in the NIR range, and that is why the brighter one are the deciduous trees while the darker one are the coniferous trees. ठीक है, ये आंसर होना चाहिए था आप सभी लोगों का, और जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा सा सोचे कि आप लोग ने अगर ये रिफ्लेक्टेंस कर्व नहीं दिखाते और तब आप आंसर नहीं कर पाते, तब एक बार को फिर भी चलता, लेकिन अगर आपने रिफ्लेक्टेंस कर्व अपने कॉपी पे बना लिया और उसके बाद भी आप आंसर नहीं कर रहे हैं इसको, तब आप सोचिए कि क्यों नहीं कर पा रहे थे या क्या आपसे मिस हो जा रहा था, है ना। कि आपने जब रिफ्लेक्टेंस कर्व बना लिया, आपने इसके आपके सामने फिगर 1.7 आप लोग ने कॉपी पे ड्रॉ किया, इसको बनाने के बाद भी आपने क्यों नहीं इसको आंसर किया, या कहाँ क्या चीज आपने मिस कर दी, आपने ऐसा क्यों सोचा कि रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा तो वो डल हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, रिफ्लेक्टेंस कम होगा तो वो ब्राइट हो जाएगा, एकदम अपोजिट सोच रहे हो आप। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे। टॉपिक हम लोग का था इमेज रेशोइंग। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हिली टरेन है, हिली टरेन पर कुछ पोर्शन सनलिट रीजन में आ रहा है, कुछ पोर्शन शैडोड रीजन में फॉल हो रहा है। यहाँ पर डीएन वैल्यूज को देखिए, यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है डीएन वैल्यू of the deciduous trees in the sunlit region in the band 8 is coming as 48, in the shadowed region it is coming as 18. For the coniferous trees, again for the sunlit region the DN value is higher, 31. In the shadowed region the coniferous trees DN value is 11, 48, 18, 31, 11. So when you carry out the any type of image interpretation, any type of image analysis, there is a variation of the DN value, and this variation is not because of the land cover, but it is because of the illumination condition. Because of the sunlit and shadowed region, at some of the places sunlight is not reaching. Because of that, the DN value is getting different. Although the object, the land use, whatever is present at that place, the land cover is same at all these places. It is again the same deciduous and coniferous trees are present at this place as well as this place. Okay, but when we are seeing the DN value, there is a strong difference between the DN values. But this is not because of the land cover, but this is because of the illumination condition. So that's why if any type of interpretation will go on the basis of the DN values only, in that case there will be incorrect interpretation, or if we are carrying out any type of analysis, it will be wrong. Another thing that you need to observe, whether it is falling in the sunlit region or in the shadowed region in band A or in band B, if you do the division, okay, if you do the division between band A and band B, 48 okay, so 48 divided by 50, it is coming as 0.96. Similarly, for the shadow, 18 divided by 19, 0.95. Okay.
Similarly, for the coniferous, 31 divided by 45, it is 69. 11 divided by 16, it is again 0.69. It means that if we perform the ratioing of these bands, if we carry out the ratioing of band A and band B, the output will be correct. Whether it is falling in the shadowed region or it is in the sunlit region, the ratioed value are correct. Although the actual values are not coming correct because of the shadowed and sunlit region, they are coming different quite. But when we are taking the ratioed value, whether it is in band A or in band B, the sunlit and shadow will have no impact when we are taking the ratio of that one. So that's why we carry out the spectral ratioing. So spectral ratios are enhancements resulting from the division of TN values in one spectral band by the corresponding values in the another band. Okay. So the above figure depicts two different land cover types, deciduous and coniferous trees occurring on both the sunlit and shadowed sites. The TN observed for each cover type are substantially lower in the shadowed area than in the sunlit area. However, the ratio values for each cover type are nearly identical irrespective of the illumination condition. A major advantage of ratio images is that they convey the spectral or color characteristics of image features regardless of variation in scene illumination conditions. Ratioed images are also for the assessment of vegetation health. The near infrared to red ratio is normally very high for healthy vegetation while low for the stressed vegetation. Thus, near infrared to red ratioed image might be very useful for differentiating between areas of stressed and non-stressed vegetation. So basically by using these ratioing, we can make so many different type of indices. Okay, we can make several index. Okay, so now come a new topic of indices. That can be a vegetation indices or there can be building index, water index. So many indexes are available nowadays. So we will cover this topic. First, I am giving you 10 minutes break and thereafter we will learn about the different type of indices. Okay. So 10 minutes break and after that I will continue from this indices topic.
Let's start the class. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So we were discussing about the image ratioing, and in image ratioing, we basically do a ratio between different bands. This ratioing is used in indices. One of the very popularly and commonly used indices are related to the vegetation. Whenever we learn about the vegetation indices, there is one thing that you need to remember. The spectral reflectance curve that we have just drawn. Okay, this spectral reflectance curve will show that when you are in the red band, okay, in the red band, the reflectance of vegetation is very low, while in the NIR band, the reflectance of the vegetation is very high. Okay, there is a formation of this edge which is called the red edge, and the vegetation has very low reflectance in the red and very high in the near infrared. Healthy vegetation especially, they have a very high reflectance. On the basis of this thing, there are several indices that are given. First one is the simple ratio vegetation index, which is NIR divided by red. In this formula, there is a problem that suppose at some of the places there is a value 0. There might be some error in the data set. And if the value is coming as 0 in the red, then division by 0 will create problem. Therefore, there is a normalization of the vegetation from by using this formula, normalized difference vegetation index, which is reflectance in NIR band minus reflectance in red band divided by reflectance in NIR band plus reflectance in red band. This is the NDVI, normalized difference vegetation index. And what will be the range of its value? What will be the range of NDVI? -1 to +1. Yeah, it will be from -1 up to +1. This is what the range. So usually those vegetations that are healthy, that have a high reflectance in the NIR band, have a value towards the higher side. Okay. All those places where vegetation is not present, they have the NDVI values towards very lower end. So by using the NDVI, we can identify where the vegetation is present, and we can also make a distinction between the healthy and stressed vegetation. There are several variation in these indices depending upon the location, because this is, this vegetation index may not be applicable very well in other regions. Some of the regions it is well applicable, but like they have given another index called OSAVI, optimized soil adjusted vegetation index. This is used at those places where vegetation is comparatively sparse. If there is a dense vegetation, like there is a forested area, in that case we will go for the NDVI. But suppose we have some place where the vegetation is very sparse. Okay, in that case, instead of taking NDVI, we take OSAVI. This is just same as the NDVI, NIR minus red divided by NIR plus red, plus there is some constant 0.16 which is added up over here. Then iron oxide ratio index. Iron oxide and hydroxide are some of the most commonly occurring mineral in the natural environment. They appear as reddish brown to the red or reddish brown to the naked eye because of high reflectance in the red and absorption in the blue. So typical red features on the land surfaces such as red soils are closely associated with the presence of iron bearing mineral, and we can enhance iron oxides using the ratio between red and blue. So just like the vegetation index, in this case it will be red divided by blue. Then we can use NDVI. What is the NDVI? Normalized difference built up index. It is calculated as SWIR, shortwave infrared minus NIR divided by shortwave infrared plus
NIR. Same, -1 to 1 range. We can also calculate NDWI, normalized difference water index. It is given as green minus NIR divided by green plus NIR. So there is a list of indices which are given over here. You can read it from the PDF that I have given you for the image enhancement. So there can be simple vegetation ratio, NDVI. Then there are different variation of the vegetation indices which are given over here. So this one is giving a complete list of several indices that are used. Okay, so it is not possible to remember all these ones, but yes, you need to remember some of the basics like NDVI, NDBI, NDWI. Okay, so these are the different type of indices, and by using this type of multi-image manipulation, we can calculate all these indices. So I'm not going to the next topic, which is about the principal component analysis. This time, because today is the tutorial session, and your task is that you already have the Prayagraj image. Okay, you have the blue, green, red, and near infrared band of the Prayagraj image. All of you have done the layer stacking and clipped the Prayagraj image from that one. Now your today's task is calculate the NDVI, normalized difference vegetation index, on that one. And once you have done the calculation of NDVI, because all of you must know about the raster calculator, isn't it? So use raster calculator, use map algebra, and by using the raster calculator, calculate the NDVI. Once you have done the vegetation NDVI computation, your next task is you need to reclassify it as a vegetated or non-vegetated area. Clear? You have the, yes, any question? Please repeat the task again. You have the multi-band image of the Prayagraj city or Prayagraj district. You have created your own data set of the Prayagraj district. In that one, you have 4 bands: blue, green, red, and near infrared. In today's tutorial session, you have one task. You need to calculate NDVI, normalized difference vegetation index, that you have just studied, NIR minus red divided by NIR plus red. By using this formula, calculate the NDVI. Once you have done the calculation of NDVI, you need to perform the reclassification of the image so that you will get a binary image where the vegetation is present and where the vegetation is not present. Okay, so start doing this tutorial in QGIS. Open your image and calculate all these things. Yes. Ma'am, we have to use that image which we had done that Prepared in the tutorial one. in last class. No? Tutorial one. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Don't use Sentinel image. Or even if anybody do not have that Prayagraj image, okay, if any one of you have not prepared that one, in that case you can use that previous means tutorial 2 image, Sentinel image. Otherwise, go for the Landsat image. If you have any questions, any confusion in doing the tutorial, you can ask. You have a very short time right now because it is already 12:23. I'm just giving you 20 minutes time. It is very, very easy task. If you remember the things of QGIS, then it is just a task of few minutes only. जिस भी स्टेप पर आपको कोई कंफ्यूजन आए, कोई खाली नहीं बैठेगा, उस पर आपको जहां कंफ्यूजन आए उसको आप पूछिए, लेकिन टास्क आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है.
Ma'am, I had not attended the last tutorial class. Is there any way still I can do? Yeah, there is no role of tutorial 2 in this one. Tutorial 2 independent था, उसका Yes, इससे ma'am. कुछ भी नहीं मैम करना। कौन सी इमेज के साथ करेंगे? जो इलाहाबाद वाला डेटा आपने दिया था उसमें टीम्स पे, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो डेटा आपने प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है? मीन्स जो डाउनलोड करना था मैम, इलाहाबाद लैंडसेट इमेजेस, हाँ, तो वो तो है मैम सिस्टम में। तो बस उसी से करें। आपके पास में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का डेटा बन गया होगा ना? आपने लेयर मर्जिंग करके, लेयर क्लिपिंग करा करके वो पूरा कर लिया होगा ना? नहीं मैम, वो पता नहीं था मैम कैसे करना है एक्चुअली। वो तो ट्यूटोरियल 1 का था। मैम मैं वही कह रहा हूँ मैम, लास्ट क्लास में था नहीं एक्चुअली मैं उस तो टाइम पे। लास्ट तो बहुत पहले का है। लास्ट क्लास तो ट्यूटोरियल 2 की थी। ओके मैम। ये उससे पहले वाला ट्यूटोरियल है। लास्ट ट्यूटोरियल में जियो रेफरेंसिंग कराई गई थी सेंटिनल इमेज पे। ये उस डेटा की बात हो रही है जिसमें 142, 143 दो आपको डेटा दिए गए थे। उसमें आपको लेयर को मर्ज करा करके, उसके बाद उसको मोज़ैक करा करके, उसके बाद आपको उसको क्लिप कराना था। अगर डेटा आपका नहीं प्रिपेयर्ड है तो आप उसको कर लीजिए। ओके मैम। Ma'am, ma'am, am I audible? Yes, Jashri, you are audible. Ma'am, once I'll share my screen, I'm not getting in the properties of multi-band image. I'm not having a list of band 4, band 3, band 2. Ma'am, only band 1 and not set value are visible to me. In that case, you have not done the image merging operation. I have done, ma'am, completely with the same procedure as you described as. That same procedure I have done and clipped the Pragaraj portion, and later if I'm trying to do in the properties to change the band values, it's not coming, ma'am. Share your screen. Ma'am, is this visible? Yeah, it is visible. Ma'am, here only not set band 1 and green band also same values. Show the stacked layer of 142 and 143. You must have done the merging operation of folder 142 layers and 143 layers. Yes, ma'am. Yeah, open those. No, this is not merged. Jashri, 143 and this is not merged. It is carrying a single band. मैम Yes. मैम जब मर्जिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैम जो प्लेस ईच इनपुट फाइल इनटू अ सेपरेट बैंड, इस पे मैम टिक करना है, उसके बाद ही आता है। मैम मेरे में भी यही प्रॉब्लम आ रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा शिवम, क्या कह रहे हैं आप? मैम जब मैम मर्जिंग ऑपरेशन करते हैं ना मैम, तो मैम इमेज सेलेक्ट करने के बाद जब प्रोसेस करते हैं उस टाइम प्लेस ईच इनपुट फाइल इनटू अ सेपरेट बैंड पे क्लिक करना है मैम। अगर वो टिक नहीं करेंगे तो मैम वो नहीं होगा ना, उसके की कैसे होगा? नहीं होगा जी मैम। मैम क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैम उस पे टिक आता है मैम, बाय डिफॉल्ट उस पे टिक आता नहीं है। नहीं आता, वो बता चुके हैं, हमने ट्यूटोरियल में बताया है। जयश्री, आपने मर्जिंग करी भी है? Yes, ma'am, I have done it, ma'am. After merging itself, I clipped the portion using this shape file. But I'm not But finding you're not showing the merged file. That's why I'm asking.
I merged to this 142M and 143M. I merged, and after merging that file, I clipped using this shape file, ma'am. So this is what I am asking, Jayashree. Where is your merged file? Once I will check in the other folders and I will show. Okay, because I think so it is 142M which is written over here. It must be your merged file. From the name it is appearing that this 142M may be your merged file. And if that one is your merged file, in that case, the merging operation has not been done. No, ma'am. I've seen it. I did that, ma'am. Merging of two files. Okay, find that file. Find that file. मैम Yes. मैम यहाँ पे जब मैं रास्टर कैलकुलेटर मैम ओपन किया मैम, और जो लास्ट टाइम पे जो मर्जिंग करके मैम आउटपुट आया था, तो मैम उसमें मैम एक ही रिजल्ट को मैम 4 बार आउटपुट 1 2 3 4 करके दिखा रहा है मैम। दिखाएगा, वो 4 बैंड है ना उसमें। हाँ तो मैम जैसे कि उसमें जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रखना और इस कारण से वो 4 बैंड उसमें आ रहा है। प्रयागराज @1 @2 @3 @4 करके आ रहा है। ओके मैम। तो मैम जो उसमें जो फॉर्मूला पे रखना है मैम, जैसे कि NIR बैंड माइनस रेड डिवाइडेड बाय NIR बैंड प्लस रेड बैंड समथिंग मैम, तो इसमें एक सीक्वेंस मैम कैसे रखेंगे मैम, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ आपने रहा मैम। सीक्वेंस में मर्ज किया होगा ना, पहले ग्रीन डाला होगा, फिर ब्लू डाला होगा, फिर रेड डाला होगा, फिर NIR डाला होगा। तो अगर आपने उस समय सही से सीक्वेंस में डाला है तो बैंड 3 जो है वो रेड बैंड होना चाहिए और बैंड 4 जो है वो नियर इंफ्रारेड बैंड होना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम।
Ma'am, that Prayagraj M is the merged file, ma'am. I named as the Prayagraj M. Yes, in that case, share your screen. Is it visible, ma'am? No, it is not visible. This one, Prayagraj M. The sheet is, yeah, wait for a minute. Yeah, okay. Yes, none of your file is merged one. The layers have not been stacked, okay? मैम शायद इन्होंने मर्जिंग ड्यूरिंग मैम एडवांस पैरामीटर मिस कर दिया है मैम, यहाँ पे हमें नॉट सेट करना था मैम, शायद इस वजह से नहीं हो पा रहा हो। Jayashri, have you got the multi-band data or not? Yes, ma'am. This 142M and 143M I This is merged what I using am the. telling you, Jayashri, repeatedly. This is not a multi-band data. Why are you not listening to this thing? This one is not a multi-band data. This is just a single band data. Okay. If you have a multi-band data, then it will not come like this way. Okay, ma'am. It will come in a right click on that one. Right click on that one. Whichever data set you are saying that it is a multi-band data, right click on that one. Go to the properties. See that it is, go to the render type, go click on the render type where single band gray is selected, go to the multi-band color. Yeah, click on this one. See, just a single band is coming. So first understand what you are doing wrong. You are not doing the layer merging operation. Because if you have done that, you will have the 142 and 143 merged files that consist of several bands. Since you are not getting that one, it means you have not done the merging operation successfully. First perform that task. Only thereafter you will get a multispectral data. Okay, ma'am. Okay, you are not doing the merging. Close this one. Close this layer property. Yeah, go to the raster. Leave everything. Go to the raster. Yes, go to the extraction. Not extract, miscellaneous. Go to the miscellaneous. Select merge. Yes. Now here you need to give the input layers. Yes, select all. Band 1, band 2, band 3, band 4. Band 2, 3, 4, 5. Yeah, open. Okay. Then check on place each input file into a separate band. Give it 0. Again 0. Yes, give file name and save. Underscore merged. Yes, save and run.
Yes, now you are getting a merged file. Yes, ma'am. Perform this operation for the another one and thereafter clip, merge and do the whole procedure. Okay, ma'am. Okay, you can unshare your screen. Thank you, ma'am. Welcome. मैम Yes. मैम इसमें जब हम एनडीवाई कैलकुलेट कर रहे हैं मैम, तो उसमें जो एनआईआर बैंड है मैम, उसका तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो आउटपुट में हमने डिफाइन किया था मल्टी इमेज के लिए 432, तो मैम वहां से तो रेड बैंड पता लग जा रहा है। तो मैम जब उसमें हम जो एक आउटपुट आया जिसपे @1 लिखा है, तो उसको एनआईआर मान सकते हैं मैम, बट उससे भी नहीं हो रहा मैम। बैंड 4 आपका एनआईआर होगा, बैंड 3 रेड होगा। तो मैम 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4 + 3 समथिंग ना मैम? हाँ। मैम मैम आपने जो ट्यूटोरियल 1 में एक पीडीएफ शेयर किया था ना डेटा प्रिपरेशन का, इन दैट पीडीएफ बैंड 4 इज रेड एंड बैंड 3 ग्रीन, बैंड 2 इज ब्लू। तो हम लोगों ने Yes. उसी तरीके से मैम अरेंज किया था लास्ट टाइम पे। जो और डेटा आप नियर लोग को सुन लीजिए पहले, जो हाँ जी। डेटा आपको दिया गया था वो लैंडसेट 8 का डेटा था, ठीक हाँ है। हाँ लैंडसेट 8 में जो बैंड 1 होता है वो एरसॉल का होता है, तो हाँ वहां पर जो काउंटिंग होती है वो बैंड 2 से शुरू होती है। इस कारण से जो डेटा रॉ डेटा आपको दिया भी गया था उसमें B2, B3, B4, B5 एंड में लिखा था। तो आपने जो जब मर्ज आपने किया तो B2 डाला, फिर B3, फिर B4, फिर B5 डाला, ठीक है। लेकिन इसको मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, देख लीजिए आप लोग। ओके मैम।
डेटा प्रिपरेशन में इलाहाबाद लैंडसैट इमेजेस आप लोग को प्रोवाइड करी गई थी। इस प्रोवाइडेड इमेजेस में 2 फोल्डर थे, 142 एंड 143। 142 को अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर B2, B3, B4, B5 ऐसे दिया है। क्यों ऐसे दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर लैंडसैट 8 के डेटा को यूज किया गया है। आप देख सकते हैं LC08 लिखा हुआ है। लैंडसैट 8 डेटा को दिया गया है और लैंडसैट 8 में फर्स्ट एरोसॉल होता है, दूसरा ब्लू, तीसरा ग्रीन बैंड, फोर्थ रेड बैंड, फिफ्थ NIR बैंड। ये यहाँ पर दिया गया है। जब आप इसको मर्ज ऑपरेशन जब परफॉर्म कर देंगे और आपके पास में इस तरीके की ये प्रयागराज की इमेज आ जाएगी। अब इसके ऊपर जब आप रास्टर कैलकुलेटर को यूज करेंगे, अब यहाँ से उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका बैंड क्या था। यहाँ देखिए 1 2 3 4 ऐसे लिख करके आ रहा है, ठीक है। आप अगर इसका सिम्बोलॉजी भी इसमें राइट क्लिक करके सिम्बोलॉजी भी ओपन करेंगे, देखिए मल्टी बैंड में देखिए बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 इस तरीके से लिख करके आ रहा है। तो यहाँ मैटर नहीं करता वहां पर सेकंड 2 3 4 5। लैंडसैट 8 के लिए इट्स बैंड 5 माइनस बैंड 4 डिवाइडेड बाय बैंड 5 प्लस बैंड 4 ऐसा होना चाहिए। लेकिन वहां का जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके से सीधे बैंड की बात हो रही है। तो क्योंकि हमको पता है कि बैंड 4 यहाँ पर नियर इंफ्रारेड है और बैंड 3 जो है वो रेड है, इस कारण से ये करने को कह रहे हैं। अब बताइए, अब क्या कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया ये? यस मैम सिम्बोलॉजी से मैं देखने के बाद ही मैम थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे क्योंकि बैंड 4 को हम रेड से दिखा रहे थे, मतलब रेड बैंड इज बैंड 4। तो इसमें इसी को नहीं, अगर आप उसको भी हम अगर खोले, सेंटिनल डेटा को अगर हम खोलते हैं, यहाँ पर हम सेंटिनल इमेज खोल रहे हैं। सेंटिनल इमेज में भी देखिए 1 2 3 4 ऐसा आ रहा है, लेकिन सेंटिनल के भी केस में जो बैंड नंबरिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पर उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सेंटिनल डेटा को भी जब हम ओपन करें तो वही 1 2 3 4 इस तरीके से वो बैंड आएगा। डेटा सेट में उसका क्या नंबरिंग थी ये मैटर नहीं करता है। चलिए, सबका हो गया NDVI कैलकुलेशन? Yes, ma'am. ओके, NDVI का रेंज माइनस 0.11 से लेकर के 0.489 तक जा रहा होगा। सब लोग चेक कर लीजिए, सबका NDVI इसी तरीके से बन रहा है।
ओके, देन आज के टर्न पर बाकी स्टूडेंट्स को अभी शायद टाइम लगेगा, सो बाकी स्टूडेंट्स भी पहले NDVI कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में आपको रिक्लास बाय टेबल को यूज करते हुए वेजिटेटेड एंड नो वेजिटेटेड के दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करना है। सो आप लोग अपना इसको टाइम दीजिए एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके आउटपुट सबके चेक करेंगे कि आप लोग का आ रहा है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो नेक्स्ट टर्न पर इससे रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है मैम? यस मैम मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो मैम मेरा तो रन नहीं हुआ, तो बट मैम एरर आ रहा है, नो रेफरेंस लेयर सिलेक्टेड, नॉट CRS प्रोवाइडेड। स्क्रीन शेयर करिए।